Hi everyone, how are you? Welcome to the next class, Negative Interrogative Sentences. Let's see here, passive voice for future tense, part 1 of 3 indefinite, last part number 4 for negative interrogative sentences followed by question mark. Then methods, there comes a questioning word, where, when, why. First of all, in the start of the sentence, then will और shall. will और shall हमें चूज़ करना पड़ता है. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जाए, ऑन विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म. फिर नॉट आता है, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क, सवालिया. तो अब यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहली जो क्लास है हमने सिर्फ इंट्रोगेटिव वाली, उसमें हमने ये क्वेश्चनिंग वर्ड यूज़ किए. यहाँ पे स्पेशली हमने आपके लिए वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इस तरह का रखा जिसमें विल और शैल को फोकस किया हमने, और ये इतना सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन सब के लिए, इन तीनों के लिए. ठीक है, तो ये बात आप जहन में रखें और बस इसको फोकस करें. ये वैसे लिख दिया क्योंकि ये रूल है, और ये क्वेश्चनिंग वर्ड अगर हो तो फिर ये इस्तेमाल होता है. तो लेट्स सी, हमें कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिया जाएगा. वाई शैल, वाई शैल we not be given, gave, given verb की थर्ड फॉर्म, given admission in the college. क्वेश्चन वर्ड, हमें कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिया जाएगा. वाई शैल वी नॉट बी गिवन एडमिशन इन द कॉलेज. क्या पेट्रोल की कीमत कम नहीं की जाएगी. shall the price of petrol not be reduced. क्या पेट्रोल की कीमत कम नहीं की जाएगी. shall the price of petrol not be reduced. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, क्या तस्वीरें नुमाइश में नहीं रखी जाएंगी. विल शैल का यूज़ कर रहे हैं हम. विल द paintings not be put in the exhibition. exhibition, exhibition. क्या तस्वीरें नुमाइश में नहीं रखी जाएंगी. will the paintings not be put in the exhibition. So I hope you understand these long sentences and last part of indefinite negative interrogative sentences. Next we shall do for in the next day for new class for continuous
I hope you understand my channel.